Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the external features of the insects. This is your paper of entomology BE. Entomology is the study of insects. In this course, you will study the classification of different orders as well as IPM. IPM means integrated pest management. How to manage different diseases which occur due to insects, what are the remedies to control the insects, etc. These phenomena will be studied in this coursework. First of all, I am here going to discuss in this lecture I am going to discuss the external feature of insects, because before the classification you must know the anatomy of the insect. First we are studying the external features. In next lecture I will discuss the internal features, and then we will move on the classification of the insects. So this is necessary to learn the basics of the entomology. This is very important from concept point of view. Insects form the major class of organisms within the phylum Arthropoda. Insecta is the class of the phylum Arthropoda. All arthropods have segmented bodies with a hard exoskeleton or the body shell or jointed limbs. Arthropod got their name from the jointed limbs or the jointed legs. But the insects class Insecta, they are typified by the presence of 3 pairs of true legs. Insects have 3 pairs of legs, but if you are discussing about general arthropod, you cannot say all arthropods have 6 legs, because there is an exception of arachnids. Arachnids, they have 4 pair of legs or 8 legs, but insects have 3 pairs of legs or 6 legs. Usually 2 pairs of wings, forewing and the hind wing, and the body is divided into 3 distinct regions: head, thorax and the abdomen. Insect body is divided into 3 distinct regions. First region is the head, second one is the thorax, and third one is the abdomen. Next is the external features. The often tube-like body of insect, mostly the body of insect is the tube-like. It is composed of series of segments. 6 segments are present in the head, 3 segments are present in the thorax, and up to 11 segments are present in the abdomen. Previously I had discussed insect body consists of 3 segments: head, thorax, insect body has 3 divisions: head, thorax and the abdomen. Now head has 6 segments, thorax has 3 segments, and abdomen has up to 11 segments. Each segment is formed from up to 4 or more less horny plates called sclerids. आपको हर सेगमेंट के अंदर, हर जो सेगमेंट है उसके अंदर आपको हॉर्नी प्लेट से मिलके बना हुआ है. आप सेक्लेरिड्स को डायसेक्शन करके सेपरेट नहीं कर सकते. डॉर्सल टर्गम, अपर जो बॉडी का सरफेस है, डॉर्सल साइड है इंसेक्ट की बॉडी की, बिलो द विंग्स, उसे कहते हैं डॉर्सल टर्गम. अब वेंट्रल स्टर्नम, जो वेंट्रल साइड है उसे वेंट्रल स्टर्नम कहेंगे. एंड 2 लेटरल प्लूरा. और जो ये डॉर्सल टर्गम और वेंट्रल स्टर्नम को आपस में कनेक्ट कर रही हैं मेम्ब्रेन्स, ये साइड्स पे मौजूद होंगी, इनको आप कहेंगे 2 लेटरल प्लूरा. प्लूरा आर एब्सेंट फ्रॉम द इंसेक्ट एब्डोमेन. ये आपको इंसेक्ट एब्डोमेन के अंदर एब्सेंट मिलेंगी. These plates and the various adjacent body segments may be fused together rigidly or jointly by the soft flexible membranes that allow for the body movement. ये जो plates हैं और दूसरे body segments हैं, ये आपस में बहुत मजबूती से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या इनके जो joints हैं वहाँ पे आपको flexible membranes मिलेंगी. Flexible membranes होने की वजह क्या है? Reason behind this is
बिकॉज दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ बॉडी इजीली। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स बॉडी की मूवमेंट को इजीली अलाउ करती हैं। द बॉडी अपेंडेजेस सच एज लेग्स आर फॉर्म्ड एज आउट ग्रोथ फ्रॉम द प्लूरा। अब जो बॉडी के अपेंडेजेस हैं जैसे कि लेग्स वगैरह हैं, ये कैसे बनती हैं? जो लेटरल साइड की आउट ग्रोथ, लेटरल साइड हैं जिन्हें आप प्लूरा ऊपर कह रहे थे, उनसे आउट ग्रोथ्स निकलती हैं जो बॉडी अपेंडेजेस बनाती हैं। Where fusion has occurred particularly in the head, the segments or their individual components are not always distinguishable. In the thorax, the sclerates are themselves often subdivided into smaller plates. जहाँ पे फ्यूजन हुई भी होती है पर्टिकुलरली हेड के रीजन में, आप वहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। वहाँ डिस्टिंग्विश वैसे कहते हैं फ़र्क कर सकने को। थॉरेक्स के रीजन में जो स्क्लेरेट्स हैं वो फर्दर सब डिवाइड होकर स्मॉलर प्लेट्स बनाते हैं। The body of insect is covered by the protective three-layered skin cuticle formed from chitin and protein. अब इंसेक्ट की जो बॉडी है वो किससे कवर है? क्यूटिकल से कवर है। क्यूटिकल की कंपोजिशन क्या है? ये काइटन और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रिसाइज कंपोजिशन एंड थिकनेस, द क्यूटिकल में बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल और हार्ड और रिजिड। अब इसकी अगर आप प्रिसाइज कंपोजिशन और थिकनेस देखें तो अभी तो हम क्योंकि जनरल पढ़े हैं ना कैरेक्टर्स इंसेक्ट के, तो हम लोग इधर यहाँ पे कुछ भी यानी स्पेसिफिक नहीं करेंगे, हम यहाँ जनरल डिस्कशन करें। अब हर इंसेक्ट के अंदर क्यूटिकल वेरी करेगी, डिपेंड करेगा कि इंसेक्ट किस किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है या वहाँ पे क्यूटिकल किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रही है।